So, hello everyone, welcome back to Gayatri online classes or Gayatri commerce classes. Friends, ଆଜି ଆମେ second chapter start କରିବା. Second chapter ଉପରେ ଆମେ notes ଟା ବନେଇଛୁ. First chapter ର ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ discussion କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାର explanation ବି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ explanation ବି ଅଛି. ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ. ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ଓଡ଼ିଆରେ explanation କରୁଛି. ए टॉपिक ऊपर सेकंड चैप्टर ऊपर आउ आपण मो चैनल सब्सक्राइब प्लीज करंतु गायत्री ऑनलाइन क्लासेस और गायत्री कॉमर्स क्लासेस गायत्री ऑनलाइन क्लासेस टा मोर यूट्यूब चैनल रे अछि आउ टीच मीट को भी मते फॉलो करंतु टीच मीट रे फॉलो कले आपन को बहुत जिंस फैसिलिटीज मिली परिबा टेस्ट सीरीज संगे रिकॉर्डेड क्लास लाइव क्लासेस आउ इंटरेक्ट भी करि परिबो जोठी तमरा डाउट रहउची जा पचारे रथिबो परीक्षा रिलेटेड सेटा भी तमे मेसेज करके मते पचारि परिबो। तो हमर द्वितीय चैप्टर हैला मैनेजमेंट फंक्शन कौन अच्छी मैनेजमेंट फंक्शन रे केते प्रकार फंक्शन अच्छी ना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग ये सब जो फंक्शंस गुड़ाक अच्छी मेन फंक्शन गुड़ाक ता ऊपर एथिरे डिस्कशन करा जायछि। तो पिला माने एथिरे देखंतु हमारा मैनेजमेंट फंक्शन रे मु प्रथम टॉपिक प्लानिंग ऊपर एथिरे बुझेइछि। प्रथम हैला मीनिंग ऑफ अ प्लानिंग features of a planning or importance significance of a planning process or types of planning ये सब टॉपिक ऊपर एथिरे एक्सप्लेनेशन अछि। और अगर आपण मोर टेलीग्राम चैनल रे भी जॉइन करिया को चाहछंती त गायत्री कॉमर्स क्लास ना रे मोर टेलीग्राम ग्रुप अछि सेथिरे भी तमे जॉइन करि परिबो आ आमे एबे ता ऊपर डिस्कशन करिबा सेकंड चैप्टर ऊपर। तो पिला माने मु एटा नोट्स ता बनेछि तम पई आउ ए नोट्स ता परचेस करिया को हेले 99 रुपीस देकी तमे परचेस करि परिबो। एथिरे टीच मीट रे भी तमे जॉइन करि परिबो। टीच मीट रे जॉइन कला परे तुमको सब फैसिलिटीज गडाक मिली जिवो आउ मोर नोट्स वन बाय वन जेहेतु मु जहाँ भी प्रोवाइड करी तुमको टेस्ट सीरीज भी मिली जिवो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मिली जिवो और पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर्स भी मिली जिवो। आ मोर फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस भी एबे स्टार्ट अप होबो ओडिसा कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ ओडिसा रे सेथरे मोर फ्री क्लासेस भी चली छी अगर सेथरे भी आपण जॉइन करिया को चाहेबे तो जॉइन कर परिबे। तो यूनिट 2 रो मैनेजमेंट फंक्शन ऊपर देखिबा। मैनेजमेंट फंक्शन रे हमर कोन कोन टॉपिक्स गडा को अछि देखिनबा। प्रथमे देखंतु प्लानिंग ऊपर अछि म कहथिले प्रथमे हमर प्लानिंग ऊपर सारिबा मीनिंग ऑफ प्लानिंग तार फीचर्स ता कोन ता इंपोर्टेंस ता कोन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रो तार मीनिंग ता फीचर्स आ इंपोर्टेंस हैला। तापर कछे स्टाफिंग ऊपर स्टाफिंग ता कोन अछि तार मीनिंग बुझेबो तार फीचर्स आ इंपोर्टेंस ए सब फंक्शंस ऊपर वन बाय वन एक्सप्लेनेशन अछि। तापर को अछि डायरेक्टिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग फीचर्स आ इंपोर्टेंस तार फीचर्स आ इंपोर्टेंस ऊपर भी ए नोट्स अछि। तापर को फिफ्थ ईयर रे टॉपिक रे हैला मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग को प्रकार करा जिवो तार फीचर्स ता कोन आ तार इंपोर्टेंस ता कोन ता ऊपर ए गडा का टॉपिक अछि। ओके तो आमे प्रथमे प्लानिंग ऊपर जानिबा तार इंट्रोडक्शन पार्ट आमे देखिनबा। Managers are required to undertake different activities in order to run an organization. सब ऑर्गेनाइजेशन को चलेबा को हेले रन करिया को हेले डिफरेंट एक्टिविटीज हमको करिया पड़ी थाए और तार रिक्वायरमेंट भी थाए मैनेजर को। ओके सेकंड पॉइंट रे कोन कुहा हेछि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वर्किंग सिमिलर एक्टिविटीज गडा को होछि सेथरे are classified under different heads known as the management functions हैला।
जो थरे जो काम रे हमर एक्टिविटीज गुड़ाक डिफरेंट वे रे करा जाए आ ताकू ही आमे मैनेजमेंट फंक्शन कही थाउ हमर गोल अचीवमेंट पई जहाँ भी एक्टिविटीज आमे सिमिलरली करी थाउ ताकू आमे मैनेजमेंट फंक्शन कही थाउ। थर्ड पॉइंट है एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग हैज टू परफॉर्म अ फंक्शन को अंडरटेकिंग करी था सच एज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये सब फंक्शंस गुड़ाक आसी था मैनेजमेंट रे। ओके यार इंट्रोडक्शन पार्ट टा तमे बुझी पारले पिला माने ए नोट्स टा आपण मोर टीच मीट रे पाई परिबे तो प्लीज देरी न करिकी आपण परचेस करिया को बहुत चेष्टा करंतु 99 रुपीस रे आपण को सब फैसिलिटीज दिया जिवो। तो से ये अछि प्लानिंग रो मीनिंग ता कोन बुझदबा हमें एवरी ऑर्गेनाइजेशंस बिगर और स्मॉल सबु बड़ और छोट ऑर्गेनाइजेशन रे नीड्स सम टाइप ऑफ प्लानिंग किछि ना किछि प्लानिंग दरकार ही थाए इन ऑर्डर टू रन ए बिजनेस को रन करबा को हेले प्रॉपर वे रे ताको रन करबा को हेले प्रॉपर देयर विल बी ए नीड टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन कोन करबा को हबो हाउ इट विल बी डन से कामटा को प्रकार हबो हु विल डू इट किए से कामटा को करिवो एंड व्हेन दिस विल बी डन से कामटा केतले हबो। ओके ये सब क्वेश्चन अराइज हे थाए माइंड रे जेतले आमे प्लानिंग करी थाउ को भी टॉपिक ऊपर को बिजनेस रिलेटेड हो कि स्टडी रिलेटेड हो आमे को भी फंक्शंस करी था एक्टिविटीज करी थाउ सेथेरे हमर ए क्वेश्चन ता प्रथमे अराइज हबो व्हाट इज टू बी डन हाउ इट विल बी डन हाउ हु will do it किए से कामटा करिवो and when this will be done ए क्वेश्चन गडा का अराइज माइंड रे हबो। then planning is a basic मैनेजनल फंक्शन प्लानिंग ता कोन गोटे बेसिक मैनेजनल फंक्शन को जाए it helps in determining the course of action ताको कोन को जाए ना course of action ताको प्लानिंग को कोर्स ऑफ एक्शन कहा जाए टू बी फॉलोटेड फॉर ए अचीविंग वेरियस ऑर्गेनाइजनल गोल हमर जिते ऑर्गेनाइजनल गोल अछि ताको अचीव करिया को हेले हमको प्रॉपर वे रे प्लानिंग करिया को पड़ी थाए आ सेटा प्लानिंग ता कोन बेसिक मेन बेसिक ता हैला मैनेजमेंट रो मैनेजनल फंक्शन रो हैला प्रथम बेसिक पॉइंट हैला प्लानिंग करिवा। Planning is a process which involves the thinking before doing. Planning टा गोटे प्रोसेस जेहेतु आमे किछि करिबा आगुरु भाबी थाउ थिंकिंग करी थाउ बिफोर डूइंग हैला थिंकिंग बिफोर डूइंग किछि भी कार्य करिबा आगुरु आमे सेही ऊपरे भाबी थाउ तो एथेरे प्लानिंग ऊपर किछि डेफिनेशन हमर दिया है जाईछि आमे सेटा बुझी नबा। प्रथम हैला प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस द ऑर्गेनाइज्ड foresight the version based on a facts and experience that is required for intellectual action मतलब रिक्वायर केतले हे थाए जेतले आमे हम कामटा को प्रॉपर वे रे ऑर्गेनाइज्ड करी थाउ प्रथमे आमे भाबी चिंती की थिंकिंग प्रोसेस कांगे प्लानिंग टा गोटे थिंकिंग प्रोसेस अछि तो ऑर्गेनाइज टा को भलो वे रे नबा को आउ से कामटा किए करी थाए जे एक्सपीरियंस होल्डर थाए हैला एक्सपर्ट्स माने थांती एक्सपीरियंस होल्डर माने थांती से जिंसटा भाबी चिंती की पॉलिसीज हो रूल्स हो रेगुलेशंस हो माने मैनेजमेंट को प्रकार आमे कले हमर बिजनेस टा या फिर हमर कंपनी टा को प्रकार ये आगु को बढ़िबो आ प्रॉपर वे रे चली परिबो तो सेति पे एटा गोटे इंटेलेक्चुअल एक्शन कहा जाय छी। अल्बर्ट एंड बेटली ये की कहछन्ती अल्बर्ट एंड बेटली कहछन्ती प्लानिंग इज ए चेकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन चेकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन एग्जांपल the result evidence in the line of action
to be followed at the stage to go through the methods to use माने सेटा गोटे स्टेज जेतुरु हमको से स्टेज देकी ही काम करिया को पड़ी थाए आ एटा के कहिसेंती हेरेन फेलो ये गोटे बहुत बड़ा प्रोफेसर आ यांकर ये एक्सपर्ट्स भी बहुत भलो यांकर बहुत हबो डेफिनेशन थ्योरीज गडाक इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज रे अछि थर्ड टाइम देखि नबा planning is the deciding of course required for reaching the organizational goal माने हमर जहा जेहेतु जहा भी ऑर्गेनाइजनल गोल रहउची ताकू प्रॉपर वे रे डिसाइडिंग करियार काम काहर रहउची ना प्लानिंग रो the line of action is decided in advance so that actual executions becomes easy later on देखंतु हमर अगर प्रॉपर वे रे प्लानिंग ता हे जाइथिबो ताको इंप्लीमेंट करिबा या फिर ताको एग्जीक्यूट करिबा सेते ही सहज हे जिवो हैला हम प्रथमे प्रॉपर वे रे प्लानिंग न करिथिले हम कामटा सेते सहज हे परिबनी अगर हमें आगुरु ही प्लानिंग करके हां या परे ए कामटा हबो अब तापरे ए कामटा हबो तो हमर कोन कि गोटे प्रॉपर वे रे लाइन वाइज कामटा शेड्यूल्ड हैला तापर को से कामटा को बहुत इजी वे रे भी इंप्लीमेंटिंग हे परिबो तापर को हमें जानिबा फीचर्स ऑफ प्लानिंग कोन अछि फीचर्स ऑफ प्लानिंग रे देखंतु एथिरे किछि पॉइंट्स दिया है जे फीचर्स ऑफ प्लानिंग रे प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज प्लानिंग ता कोन गोटे मेंटल एक्सरसाइज अटे प्लानिंग रे कोन प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग प्राइमेसी माने कोन प्राइमरी एटा माने मेन फंक्शन फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग ता जेतु ताको प्राइमेसी ऑफ अ प्लानिंग को हाइची प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस देखंतु प्लानिंग ता कोन कंटीन्यूअस प्रोसेस काहे कि को आइची काहे ना प्लानिंग सब जिंस रे जहां भी हमें काम करिथाउ डे टू डे लाइफ रे प्लानिंग ता दरकार पड़ी थाए और प्लानिंग ता हेई थाए सेति पई याको हमें कंटीन्यूअस प्रोसेस कहि थाउ प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग ता कोन फॉरवर्ड लुकिंग आगु को देखि काम करिया पड़ी थाए सेति पई आगु फॉरवर्ड फ्यूचर ता को फ्यूचर ता हम पास्ट ता एते खराब हेची फ्यूचर ता केते भल आगे हबो ताको फॉरवर्ड लुकिंग देखि कि ही हमें से कामटा करि थाउ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजंस मेकिंग प्लानिंग रे कोन इन्वॉल्व हेथे ना प्रॉपर वे रे डिसीजन नबा अगर हमें प्रॉपर वे रे प्लानिंग करछबो तो डिसीजंस नबारे हिचकिच हबनी आ प्रॉब्लम हबनी फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स जहा रहउची ता ऊपर हमर फोकस रहिया दरकार ऑल मैनेजर्स प्लान आ सब मैनेजर माने प्रॉपर वे रे प्लान करबा को पड़ी थाए प्लानिंग ए रेशनल अप्रोच प्लानिंग ता कोन गोटे रेशनल अप्रोच होते लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी प्लानिंग कोन लीड्स करी थाए ना तार एफिशिएंसी काम करिया रे एफिशिएंसी आ इकोनॉमिक को प्रकार ग्रोथ करबा ता ऊपर ही प्लानिंग ता भी काम करी थाए लिमिटेटिंग फैक्टर्स सेथिरे कोन प्लानिंग रे लिमिटेटिंग फैक्टर्स हेई थाए रियलिस्टिक आ एटा रियलिस्टिक बहुत रही थाए माने रियल आम डे टू डे लाइफ रे रियलिस्टिक लाइफ रे काम रे आसी थाए आ प्लानिंग ता कोन फ्लेक्सिबिलिटी आ लास्ट रे हला प्लानिंग ता कोन कोऑर्डिनेशन प्लानिंग द्वारा हम भीतर कोऑर्डिनेशन ता भी प्रॉपर वे रे हेई थाए तो यार जहा पॉइंट्स हमें देखिले तार एक्सप्लेनेशन भी एठी दिया हेची पिला माने following the points will be explain the features or nature of planning माने जेहेतु जहा भी पॉइंट्स लिखा हेची तार फीचर्स और नेचर्स ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया हेची प्रथम हमर पॉइंट कोन थिला ना प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज कहीं के प्लानिंग गोटे मेंटल एक्सरसाइज हुआ होची प्लानिंग रिक्वायर्स अ मेंटल एक्सरसाइज फॉर एक्सेसिंग द करंट बिजनेस सिचुएशन कौन हमर करंट बिजनेस सिचुएशन अछि एंड एक्सेप्टेड फ्यूचर एनवायरनमेंट फ्यूचर रे हमर कोन हबो सेटा एक्सेप्टेड करी था फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन ओके
तो प्लानिंग टा कौन हमको मेंटल एक्सरसाइज कहीं कह जाए ना से आम भाभी चिंती काम कर करंट सिचुएशन टा कौन बिजनेस रो करंट सिचुएशन टा कौन आ फ्यूचर रे आगु केमती बढ़ी कि बिजनेस टा आगु केमती बढ़िबो को प्रकार आम बिजनेस रे प्रॉफिट अर्निंग हबो से जिनसटा आम देखिकी डिसीजन नहीं थाउ सेथिपई ताको मेंटल एक्सरसाइज कुहाइछ। सेकंड पॉइंट देखि नबा primacy of a planning कौन अच्छे primacy of planning is the first function planning टा कौन गोटे first function of the planner रो गोटे first function हैला planning okay other functions like organizing staffing directing और controlling ये सब जेतु जहाँ functions गुड़ाक रोची organizing staffing directing और controlling etc are followed by planning सेटा follow कहा द्वारा करा होची ना प्लानिंग द्वारा करा होची। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्लानिंग टा गोटे कोन कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड जहाँ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग केतले सरी न थाए केतले एंड हे न थाए तार विथ द प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान तार प्लान वाइज प्रिपेयर करा जाय थाए शेड्यूल करा जाय थाए द प्लान्स हैव टू एडजस्टेड और रीएडजस्टेड एज पर द सिचुएशन प्लान्स गड़ा को एडजस्टेड करा जाय थाए और रीएडजस्टेड करा जाय थाए एज पर द सिचुएशंस एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट ओके चेंजिंग एनवायरनमेंट हमर जेहेतु जहाँ भी हमें प्लान्स करी थाओ सेटा एडजस्टेड हे थाए रीएडजस्टेड भी हे थाए आउ हमर सिचुएशंस वाइज एनवायरनमेंट वाइज चेंजेस भी हे थाए। फोर्थ पॉइंट हैला प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग कहीं कि हमें प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग कही थाओ प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन प्लानिंग टा कोन गोटे फ्यूचरिस्टिक फंक्शन अछि one has to look for the further while planning जितले भी हमें प्लानिंग करी थाउ से प्रॉपर वे रे से विषय रे हमें जानी थाउ को प्रकार हमें प्लानिंग कले पॉसिबल सक्सेस हबो हला the past performance and the future possibilities हमर past performance कोन रही छी और future possibilities आगु को कोन रहिबो become the basic for a planning से गडा को हमर कोन अछि बेसिक्स जिंस गडा को अटी छी जेते प्लानिंग रे आमे प्रथमे प्लानिंग जेतले करूछु आगु को देखि कि आगु को कोन हबो कोन नै ता विषय भाबी चिंती के करी थाओ सेते पई हमर ताकू कुहा जाय सेटा कोन past performance हेई था ओके एटा गोटे पास्ट परफॉर्मेंस हेता और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ताको हमें पास्ट परफॉर्मेंस भी कहि थाउ और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी कहि थाउ तापर को फिफ्थ पॉइंट हमें देखि नबा इन्वॉल्व्स डिसीजंस मेकिंग एथरे डिसीजंस मेकिंग प्रॉपर वे रे को प्रकार निया जीवो ता सेतरे कोन कोन जिंस इन्वॉल्व्स अछि तापर पे हमें जानिबा planning involves a decisions making a planner has to select planner कौन करता है select ये करता है the most suitable out of the many alternatives बहुत अब alternatives को select करके करता है जहाँ available है when there is a only one alternatives जो ठी हमारा गोटे only one alternatives था माने गोटे ही देखो को भी काम कला बेल को हेले हमको अलग अलग अल्टरनेटिव्स करिया को पड़ी थाए माने गोटे जगह रे गोटे ये रे हमें रही पार न थाओ कहीं ना को जेतले हमें जहाँ भाभी थाओ से जिनसटा कोन फेल भी हे जाए सेति पई हमें तार अल्टरनेटिव्स भी वे खोजी थाओ कि अगर एई रास्ता रे न होई पाले द्वितीय रास्ता रे हमें ऑप्शन जेमति का ऑप्शन 1 रखिबो या फिर ऑप्शन 1 सक्सेसफुल न होई पाले ऑप्शन बी ओके से प्रकार अलग अलग अल्टरनेटिव्स हमें रखी थाओ और से ऊपर ही काम करी थाओ हैला सेति पई कोन हम प्लानिंग कला ले हम डिसीजंस गडा को बहुत इंप्रूव हे थाए आ एक्सपीरियंस से थ्रू हमको एक्सपीरियंस मिली थाए आ एक्सपर्ट्स लोक माने सेथरे काम करंती
कहीं कहीं ना बिजनेस टा को प्रकार ग्रोथ हम को प्रकार ना को रूल रेगुलेशन आ को पॉलिसीज बनैले बिजनेस टा ग्रोथ करिवो आ डिसीजन पावर टा कोन सेतेरे इंक्रीज करि थाए। प्लानिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग कौन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऊपर फोकस रखी थाए। एन ऑर्गेनाइजेशंस आम ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ए नंबर ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ पर्सन्स अछंती each one of them has a different personality समतंकर पर्सनालिटीज और एटीट्यूड्स गुड़ाक डिफरेंट डिफरेंट था देखो आम जहाँ भाभी चिंती के काम करूना कहीं अगर गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे माने 10 जन एम्प्लॉयज अछंती तांकर कथबार्ता करिया तांकर रहन सहल तांकर सब एटीट्यूड गुड़ाक अलग अलग प्रकार होता है तो आम सब डिफरेंट पीपल्स को लेकिन आम चली थाउ सेतिबाई तांकर कोन पर्सनालिटीज और एटीट्यूड गुड़ाक डिफरेंट वे रे हेइथाय। There will be a difference of opinion about the objectives of the enterprise and the method of achieving them. आमर जेहेतु जहाँ ऑब्जेक्टिव्स रोची ना ताको अचीविंग करिया को हेले प्रॉपर वे रे हमें से जिनसे ऊपर फोकस करी थाउ आउ एम्प्लॉयज मानो को भी कही थाउ ऑर्डर करी थाउ कि हमको एतिकी रु एतिकी टाइम भितरे ए जिनसटा कंप्लीट करके दियो आउ कोऑर्डिनेशन भी तांको भितरे हमें बने के रखी थाउ। हमर मेन फोकस हैला से ऑब्जेक्टिव्स को केमति का हमर गोल टा को अचीव करबा तो लोक मानो को नै कि ही हमें नंबर्स ऑफ पीपल्स को नै कि हमें काम करी थाउ। ऑल मैनेजर्स प्लान कौन मैनेजर्स माने कौन प्लान करी थांती क्वेश्चन इज ऑफ्टेनली आस्क्ड as to who should plan how should a plan as per the definitions of a management every manager plans at a wherever level of heritage हमारे हेरिटेज गुड़ाक कौन होता है लेवल ऑफ हेरिटेज रे कौन लगी थाए तार डेफिनेशन माने मैनेजमेंट डेफिनेशन ता कौन आ मैनेजमेंट ता को प्रकार फंक्शन गुड़ाक बिजनेस रे ऑर्गेनाइजेशन रे काम आसीबो से जिंसटा के मैनेजर ता भाबी थाए प्लान करी थाए। He may be the degrees importance and magnitudes of a planning depends on the level at which it is performed जो भी माने काम रे हमें परफॉर्म करी था प्लानिंग ता डिपेंड्स करता है सब लेवल रे प्लानिंग डिपेंड्स करी था काहे ना विदाउट प्लानिंग को कामटा हे परिबनी सेति में ताको इंपोर्टेंस बेसी दिया जाए। ओके 8 पॉइंट हमें देखि नबा प्लानिंग ए रेशनल अप्रोच प्लानिंग टा कोन गोटे रेशनल अप्रोच कहीं आम प्लानिंग टा को रेशनल अप्रोच कही थाउ प्लानिंग प्रोसेस इज ए रेशनल अप्रोच प्लानिंग प्रोसेस टा कोन गोटे रेशनल अप्रोच अटे टू द अचीविंग ऑफ organizational goal and action is a rational if it is objectively and intellectually decided से जिनसटा ऑब्जेक्टिवली आउ इंटेलेक्चुअल डिसाइड करा जाई थाए। 9th पॉइंट है लीड्स टू इफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक्स एमु कहिथिली माने इकोनॉमिक्स रे प्लानिंग दा इफिशिएंसी और इकोनॉमिक्स रे को प्रकार काम आस्थाय। प्लानिंग इन्वॉल्व्स द एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेस को यूटिलाइज करा जाए लाइक ए कैपिटल लेबर मशीन मटेरियल एसेट्रा देखंतु प्लानिंग रे कोन हेथाय हमर इफिशिएंसी और इकोनॉमी काम आसी थाए सेतेरे हमर कोन रिसोर्सेस लागि थाए ना कैपिटल लागि थाए लेबर लागि थाए मशीन्स लागि थाए और मटेरियल लागि थाए ये सब जिंस एथिरे रिसोर्स गुड़ाक हमर ऑर्गेनाइजेशन से लागि थाए। एवरी फैक्टर्स ऑफ organizations of production it is put to efficient and economically
आमर जेहेतु जहाँ भी फैक्टर्स गुड़ाक रोचे प्रोडक्शन करने को हेले ताको इफिशिएंट वे रे आउ इकोनॉमिकली यूज करा जाए यूज सो दैट द आउटपुट तार आउटपुट टा कौन बाहर रिजल्ट टा कौन बाहर सेटा मायने रखी थाए। तो एग्जांपल रे आमे देखि नबा results is more than the efforts देखंतु रिजल्ट बहुत इंपोर्टेंट है थाए तमे केते एफर्ट लगेला कोन लगेला किए देखिबेनी प्रथम रिजल्ट देखिबे केते देखो आपण केते पाठ पढ़ले कोन कले किए देखिया को जानती प्रथमे परीक्षार रिजल्ट आसिले पेरेंट्स हो के बाहर लोक माने कोन पछंती अरे पिला तोर केते रिजल्ट आसिला काहे के पछरंती काहे कि ना तांको रिजल्ट रो मतलब अछि पिलाटा केते परिश्रम कला केते नाही सी किए देखंती प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग प्लानिंग टा कोन करथे कंट्रोलिंग ऑफ एफर्ट्स हमर एफर्ट्स टा को कंट्रोलिंग करी थे व्हिच आल्सो एंश्योर्स इकोनॉमिक्स से थरो हमर इकोनॉमिक्स टा भी एंश्योर सेता देखो तो प्रॉपर वे रे प्लानिंग हेले हमर प्रोडक्शन जे रॉ मटेरियल्स रो परचेज प्राइस गडा को कम हे थे तापर को मिनिमम यूटिलाइजेशन से हमें करी था जे थरो हमको प्रॉफिट को प्रकार इंक्रीज करबो सेथरे ही ध्यान हमर थाए 10 पॉइंट आमे देखि नबा लिमिटिंग फैक्टर्स कौन है लिमिटिंग फैक्टर्स गडा अछि ए प्लानर शुड कंसीडर लिमिटिंग फैक्टर्स लाइक अ मनी और मैन पावर देखंतु माने प्लानर गडा को फैक्टर्स बेसी कंसीडर करा ही जाते हमर मनी पैसा रिलेटेड जे मैन पावर मनुष्य को नेकी कि प्रकार काम करा जिवो सेटा माने मैन पावर देखा जाय थाए और मटेरियल्स गडा को प्रकार यूज हबो और मार्केट रे को प्रकार ना कमा जिवो से ऊपर माने मार्केट रे को प्रकार हमर कंपटीशन रे प्रथमे हमर नाटा केमति का आसीबो से पर ही हमें काम करी थाओ बिफोर ए टेकिंग अप प्लानिंग if a planner ignores the limiting factors then a planning is bound to fail देखंतु अगर हमर जेहेतु जहाँ भी आमे प्लान करी थाओ हम पाखरे अगर मनी नथिबो हाँ मु भाभी देछि कि मु गोटे बड़ बिजनेसमैन टे हेबी मु गोटे बड़ शॉप टे खोलिबी हेले गोटे बड़ शॉप टे खोलिया को हेले दुकान खोलिया कोले सितिर मनी मैटर करी थाए मैन पावर मैटर करथाय मटेरियल्स कोन दरकार सेटा मैटर करथाय तमे इन्वेस्टमेंट केते लगेलो बिजनेस रे सेटा मैटर करी थाए सेति पई ए सबो जिंस दरकार पड़ी थाए अगर ए जिंसटा नथिले हमर जहाँ आमे प्लानिंग करथाउ तो सेथिरे आमे फेल मारथाउ सेति पई खाली प्लानिंग कर देले हबनी हमर जहाँ रिसोर्सेस अछि जहाँ दरकार अछि ताको भी देखिया दरकारे नहले तमे तमरे जहाँ प्लान करथिबो सेटा फेल मारी जिवो ओके एतिकी पॉइंट आपन का होप के बुझा पड़थिबो 11 हैला कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ता कोन कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस ता को प्रकार चलेबा को हेले सेटा कोऑर्डिनेशन रहिले ही हमें प्रॉपर वे रे ऑर्गेनाइजेशन को चले पारिबो प्लानिंग planning coordinates the what how is why এটা is आसीबनी और आसीबो के एटी और आसीबो how और why and where of a planning देखंतु ए क्वेश्चन गडा का अराइज हेई था को प्रकारे को ठीक केमिति का काम करिया को पड़िबो आउ कहा संगरे काम करबो हमें कोऑर्डिनेट देखो को भी बिजनेस स्टार्टअप कला को हेले हमें लोक मानन को नै के काम करबा तो हम कोन मैनेजर और एम्प्लॉय भीतरे बॉन्डिंग टा केमति का तांका भीतरे रिलेशनशिप टा केमति का कोऑर्डिनेशन टा केमति का सेटा जानिया को दरकार 12th पॉइंट हैला फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी माने कोन प्लानिंग रे फ्लेक्सिबिलिटी माने कोन प्लानिंग the process should be adapted to the changing business changing environment देखंतु बिजनेस चेंजिंग एनवायरनमेंट ता बहुत मायने रखी था इफ अ प्लानिंग इज मेड रीड that then it will not to be able
not to be able achieve a business goal. हमर business goal टा को हमें achieve करि परिबोनी अगर हमर प्लानिंग टा प्रॉपर वे रे हेई नथिबा त हमें business goal टा achieve करि परिबोनी. Planning process should be adapted to the changing business environment. Business environment रे बहुत अब changing आसी थाए से changing को नहीं कि ही हमारा planning हेई थाए हैला केतळे उतार चढ़ाव फेल सक्सेस हेई थाए से माने एनवायरनमेंट को नहीं कि ही हमें प्लानिंग करि थाओ और सेटा फ्लेक्सिबिलिटी हेई थाए. If planning is made, planning टा बना ही थाए rigid, then it will not be able to achieve a business goal, not able to achieve the business goal. Okay, realistic टा कौन? Planning is based on future forecast. Future forecast मतलब based है था. Through the future is always uncertain. कहीं ना फ्यूचर टा हमारा सदाले अनसर्टेन हेई थाए केतले सर्टेनली हेई न थाए बट द रिडक्शन शुड बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल. देखंतु हमारे रियल लाइफ रे प्लानिंग टा बहुत ही काम रे आसी थाए. प्रॉपर वे रे प्लानिंग कले हमारा रियलिस्टिक काम गुडा को भी बहुत भला के हेई थाए. The objective should be realistic with a normal efforts. नॉर्मल एफर्ट्स लगे कि भी हमें हमारे कामटा को भी हासिल करी था कहीं ना अगर हमार प्लानिंग प्रॉपर वे रे हेई थाए तो ए सब पॉइंट्स हैला फीचर्स ऑफ प्लानिंग रो आपन को बुझा पड़थिबो. आई होप कि तुमको ये लाइन गडा को ये पॉइंट्स गडा को बुझा पड़थिबो. आ पिला माने आगु को हमें देखिबा इंपोर्टेंस टा कोन तार प्लानिंग रो इंपोर्टेंस टा कोन. Importance or a significance of planning. कौन importance अच्छी और significance अच्छी planning रो. Planning is the first step. Planning टा कौन गोटे first step अटे in management. Management रे planning टा कौन गोटे first step. The increasing complexities, the increasing complexities of a business are making a plans more important for टैकलिंग देम. देखंतु बहुत इंपोर्टेंट हेता है से कामटा को को प्रकार हमें करि थाओ कहीं ना प्लानिंग टा हेला मैनेजमेंट रो फर्स्ट स्टेप हेले आजि काले जते कंपटीशन कॉम्प्लेक्सिटी जते होउची बिजनेस रे तो प्रथम हमर मोस्ट इंपोर्टेंट हेला प्रॉपर वे रे प्लानिंग करबा आ टैकलिंग करबा से कामटा को. सेथरे देखंतु पॉइंट्स कोडा कोन कोन इंक्लूडेड अछि इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग रे. एटा भी पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे. इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आइदर फीचर्स ऑफ प्लानिंग रे लॉन्ग क्वेश्चन रे आसी पारे हेला सेटा देखि कि जिबे निश्चिंत. प्लानिंग प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन. प्लानिंग कोन प्रोवाइड करि थाए डायरेक्शन गोटे गति प्रोवाइड करि थाए. प्लानिंग रिड्यूस रिस्क रिड्यूस करि थाए. प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग. Okay, planning facilitates decisions making. Planning promotes innovations and creativity. Planning कौन provide करी था ना innovations और creativity provide करी था. Planning के facilitates control. प्लानिंग कौन करता है फैसिलिटेट कंट्रोल. कंट्रोल को प्रकार करा जिवो ताको माने बेसी ध्यान देई थाए. तापर को अच्छी फेसिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस. मॉडर्न बिजनेस जो प्रकार प्रॉब्लम्स गुड़ा आसुची एबे मॉडर्न लाइफ रे मॉडर्न टेक्नोलॉजी रे कौन कौन दरकार अच्छी फेसिंग कौन करे प्लानिंग द्वारा हमें से जिनसटा देखि थाउ. तापर को अच्छी फेस कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट. फेस कंपटीशन माने डायरेक्ट कंपटीशन हैला. तो आमे एबे प्रथम ये सब पॉइंट्स गुडा का देखंतु 15 टा पॉइंट अछि एथरे पॉइंट्स निश्चिंत मन रखि कि जिबे. फॉर वन अगेंस्ट बिजनेस फेलियर्स. ओके, मीटिंग ए चेंजिंग सिचुएशंस. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. कौन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आसी थाए बिजनेस रे. मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करी थाए.
better utilizations of a resources, better utilizations of the resources, economic in operations or facilitates delegations. ये सब points गुड़ाक main point देखी नेबे ये गुड़ाक exam रे आसी परियो. तो आमे तार explanation भी देखी नबा. प्लानिंग प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन. प्लानिंग कौन प्रोवाइड करी थे ना गोटे डायरेक्शन प्रोवाइड करी थे. प्लानिंग प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन टू एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन से जेते जण काम करछंती बाय द प्लानिंग तांको गोटे डायरेक्शन मिली थाए. इट डिटरमाइन्स व्हाट इज टू बी डन. को प्रकार से कामटा करिया को पड़िबो. व्हेन इज टू बी डन. केतळे से कामटा करिया को पड़िबो. एंड हाउ इज टू बी डन. हैला केतळे से कामटा करिया को पड़िबो. किए से कामटा करिबो. एंड हु इज टू बी डन. डन आएगा ये व्हाट लिखा है इधर. डन. ओके. तो एक क्वेश्चन गड़ा का एराइज करे थे. व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ is to be done, who is to be done. This type of a planning determines the activities to be undertaken to taken off by different person. ये सब different person द्वारा काम होता है जो जहाँ function activities गड़ा कर रही था. And the way these are to be done. तो second point हमें देखी ना बा. Planning reduce risks. प्लानिंग टा कौन करता है रिस्क गुड़ा को रिड्यूस करी थाए. को प्रकार ए बिजनेस में फेस अनसर्टेनिटीज एंड चेंजिंग सिचुएशन. बिजनेस टा कौन बहुत हम अनसर्टेनिटीज आ चेंजिंग सिचुएशंस आसी थाए एवरी डे माने सदा वाले बिजनेस रे किछि ना किछि अनसर्टेनिटीज आ बिजनेस रे चेंजिंग सिचुएशंस गुड़ा को फ्रंट या तार सामना करिया को पड़ी थाए. A manager predicts future possibilities. Manager कौन predicate करी था ना future possibilities predicate करता है while planning, and this helps in meeting the coming situation. आगो को जो भी सिचुएशन आसी था ता आगरु प्रेडिक्टेट कराई था. कहीं ना मु कही अगर गोटे जगह रे अगर तमरा कामटा हे पारिबनी तार अल्टरनेटिव्स या फिर तार ऑप्शंस भी रखी थिबो जेतु अन्य द्वारा भी तमे काम करै पारिबो. प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग. प्लानिंग कौन करता है ओवरलैपिंग रिड्यूस करी था. Plans are prepared for the organization. So plans goda ko prepared hai by the organization as a whole, and then departmentally plans are made on the basics of business plans. Business plans ta ko provide kara hai tha. This exercise will bring coordinate among different departments, avoiding overlapping and unnecessary माने सेतेरे देखो ओवरलैपिंग आउ अननेसेसरी एक्टिविटीज टा को अवॉइड करी था. अगर हमें प्रॉपर वे रे प्लानिंग करी था तो हमरो वेस्टेज टाइम या फिर वेस्टेज जिंस गुडा हमें अवॉइड करी था. The plans will be bring clarity to every manager. सब मैनेजर को क्लियरली प्रोवाइड करा हेता है and the activities to be taken off by that department. ओके जेतु जहाँ भी एक्टिविटीज आमे करी थाओ सेटा प्रॉपर वे रे क्लासिफाइड करा जाई थाए. तापर को फोर्थ पॉइंट हैला प्लानिंग फैसिलिटेट्स द डिसीजंस मेकिंग. प्लानिंग कौन फैसिलिटेट्स करी थाए ना डिसीजंस मेकिंग. प्लानिंग इज रिलेटेड टू सिलेक्टिंग गोल. हमरा जहाँ गोल हेता ना ताको सिलेक्टेड प्रॉपर वे रे करी थाए ऑन द बेसिक्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर एजम्पशंस. बेसिक्स ऑफ फोरकास्टिंग और फ्यूचर एजम्पशंस द्वारा हमें डिसीजंस गड़ा को नहीं थाओ. तबरा को फिफ्थ पॉइंट कौन लिखा है प्लानिंग
मोड्स इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी देखंतु इनोवेशन और क्रिएटिविटी आम प्लानिंग रे अन्य अन्य काम कला बेलू आमर अलग अलग आइडियाज गुड़ाक आसी था इनोवेशंस भी होता है आउ क्रिएटिविटी आमर इंक्रीज करी था A better planning system should encourage managers to devise new ways माने new ways द्वारा मैनेजर आइडियाज लगे थाए न्यू वे रे आउ अलग अलग वे रे को प्रकार आम बिजनेस इंक्रीज करबा से से काम करि थाए डूइंग द थिंग्स अलग अलग वे रे काम करि थाए मैनेजर टू डिवाइस न्यू ways of doing the things it helps innovative देखो इससे कौन हेल्प करी था इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी थिंकिंग हमर जेहेतु जहाँ इनोवेटिव आ नॉलेज आ स्किल्स को लगे कि आमे से कामटा क्रिएटिविटी वे रे करी थाउ among the managers because they will be think of many new things माने से कौन अलग अलग थिंकिंग या फिर अन्य अन्य न्यू जिनस ऊपर भाभी थांती आ प्लानिंग करी थांती सेथिपाई आमे कौन कही थाउ कि प्लानिंग प्रमोट करे इनोवेशन आउ क्रिएटिविटी 6th पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल को प्रकार कंट्रोल करी थाए प्लानिंग एंड कंट्रोल आर इंस्पेरेबल दीटा अलग अलग वे होता है बट प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेटिंग करियारे हेल्प करी थे एंड लेइंग डाउन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ताको को प्रकार परफॉर्मेंस करिया दरकार सेथरे से हेल्प करी थाए this will enable the management to check a performance of a orientates परफॉर्मेंस गड़ा को सब देखी था प्लानिंग आउ फैसिलिटेड वे रे को प्रकार काम करिवो से ऊपर कोन मैनेजर भाबी थाए 7 पॉइंट हैला फेसिंग ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस माने कौन कौन फेसिंग करी थाए कॉम्प्लेक्सिटी आ मॉडर्न बिजनेस रे कौन कौन मैनेजर फेसिंग करी थाए जेतले न्यू बिजनेस स्टार्टअप करिवो कॉम्प्लेक्सिटी माने अलग अलग प्रकार आसीथिबो प्रॉब्लम्स भी आसीबो कंपटीशन चलिले से कंपटीशन रे भी तमे को प्रकार निज को आगु को रखिबो ता विषय रे भी भाबिया को पड़ी थाए The business at present is becoming more and more complex. A large number of a person are required to be employed for managing a variety of job. Managing a variety of job. Okay? फेसिंग करता है मॉडर्न बिजनेस ऊपर फेसिंग करी थाए आ अलग अलग वेराइटीज ऑफ कामर जॉब रे से मन लगे थाए आ अलग अलग जगार से बहुत जिनस शिखी थाए आ निजर बिजनेस टा स्टार्टअप करी थाए तापर को अच्छी 8 पॉइंट फेस कंपटीशन से इज इन द मार्केट फेस कंपटीशन माने मु कोन कहि थिली डायरेक्ट कंपटीशन मिला the large scale productions has increased that the markets belongs rational boundaries से हेता है there is a competition सेथरे कोन competition हेता not only for from a domestic producers not only for a domestic producer but also for a foreign competitors मानकर भी काम आसी थाए force one against business failures कौन हेले से लिखी माने बिजनेस फेलियर्स कहीं की हेई थांती बिजनेस फेलियर्स कहीं की फेलियर्स रे सामना हेई थाए कहीं ना हम बिजनेस फेलियर्स में बी ड्यू टू रॉन्ग एंड अनसाइंटिफिक प्लानिंग देखंतु हमर प्लानिंग टा अगर रॉन्ग वे रे हेई थाए ताहले हमें फेलियर रो सामना करि थाउ इफ द प्लानिंग इज नॉट गुड हमर प्लानिंग अगर गुड नहीं भलो नहीं then there will be a wastage of a human
ह्यूमन बीइंग्स रो वेस्टेज माने तार भाबे चिंतियार किछि लाभ नाही एंड फिजिकल रिसोर्सेस जे जहाँ फिजिकल रिसोर्सेस जहाँ लगेछि तार भी किछि मूल्य नाही अगर आपण प्रॉपर वे रे प्लानिंग करि नाहंती तो आ सेति पय हमको बिजनेस फेलियर रो सामना करिया को पड़ी थाए 10th पॉइंट कोन अछि मीटिंग चेंजिंग सिचुएशंस मीटिंग चेंजिंग सिचुएशंस का कुआ जाए द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन टा बहुत फास्ट चेंजिंग है था एंड कंटिन्यूइंग इन्फ्लेक्शनरी सिचुएशन हैज ब्रॉट मोर मनी both our money and to the consumers द्वारा हमको बहुत अब मनी मिली थाए कहीं ना द सिचुएशंस गुड़ाक केतले इन्फ्लेक्शन केतले डिमांड कहार को केतले बढ़ी जाए आ कहार केतले डाउन हो जाए लॉस रो सामना करिया को पड़ी था और प्रॉफिट रो भी सामना करिया को पड़ी था तो कस्टमर्स मानकु आमे सिचुएशंस वाइज कंज्यूमर्स मानकर कोन नीड्स अछि ताको भी देखिया को पड़ी थाए आउ हमर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन रे बहुत चेंजेस आसी थाए से चेंजेस टा को देखि के हम प्लानिंग करिया को पड़ी ओके A business is required to adjust its working with the needs of situation. बिजनेस टा कौन रिक्वायर करते एडजस्ट इट्स वर्किंग जहाँ भी काम करिया को हेले ताको कौन नीड्स सेथरे दरकार से सिचुएशन से को प्रकार काम कले से जिनसटा को आगु को बढ़े पारिबो से ऊपर से काम करी थाए ओनली प्लानिंग may help a business to keep pace with the changing environment. Okay. चेंजिंग इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वर्ड्स चेंजिंग आमर कौन करता है हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल वर्ल्ड को ही चेंज करी था कहीं ना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन गुड़ाक एते चेंजेसेबल होता है कि सेथरे आम बिजनेस टा आउ इन्फ्लेक्शनरी बहुत इंक्रीज करी जाए जेहेतु आम कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करी पारेनी बेले बेले है तापर को 11 पॉइंट देखिबा टेक्निकल चेंजेस हमर बिजनेस रे कोन टेक्निकल चेंजेस आसीता है द टेक्नोलॉजी इज अ फास्ट चेंजिंग दिस डेज टेक्नोलॉजी गडा का बहुत फास्ट चेंजिंग्स हुए आजिकल डेज भीतर ए चेंज ए मशीन व्हिच इज यूज्ड टुडे मशीन्स गडा को जहां भी यूज करा जाए आजी मे बिकम्स obsoletes tomorrow देखंतु आजिकल टेक्नोलॉजी रे बहुत अब चेंजेस आछि माने एबे आमे जो टेक्नोलॉजी यूज करी थाउ ता आगु को आउ केतले आउ टिके दिन गले नुआ नुआ टेक्नोलॉजी आउरी बाहरी जीव इनोवेशन हे जीव तो हमको चेंज करिया को पड़ी थाए मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज को केमिति का मिनिमाइजिंग करिबा प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर प्लानिंग गुड़ाक सदाले माने फ्यूचर को देखिकी ही करा जाए नो बॉडी कैन प्रेडिकेट एक्यूरेटली माने किए भी प्रेडिकेट करि पारंतिनी एक्यूरेटली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन कौन हबा को हबो माने कौन करिबा को हबो सेटा एक्चुअली आमे प्रेडिक्टेड जेते भी कले सेटा हेई पारेनी बहुत अब चेंजेस आसी थाए बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग देखंतु बिजनेस एनवायरनमेंट रे सदाळे चेंजेस गडाक हेई थाए अगर आमे प्रॉपर वे रे प्लानिंग करथिबा त हमर अनसर्टेनिटीज गडाक आमे कोन कम करि परिबो बेटर यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेस हमारा यूटिलाइजेशंस को प्रकार प्रॉपर वे रे यूटिलाइज करबा अनदर से एडवांटेज ऑफ अ प्लानिंग और अलगा एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इज द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को प्रकार हमारा यूटिलाइजेशंस बिजनेस रे रिसोर्स रो यूटिलाइजेशंस को प्रकार हमें कर परिबू Another advantages of planning is the better utilizations of the
बिजनेस रो बेटर यूटिलाइजेशन को प्रकार करि परिबो ऑल रिसोर्सेस आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड देन ऑपरेशंस आर प्लांटेड देखंतु जेतु जहाँ भी आमे रिसोर्सेस गुड़ाक यूज करि थाउ ताको प्रॉपर वे रे फर्स्ट प्लानिंग कर थाउ आइडेंटिफाइंग करि थाउ तापरे से जिंसटा इम्प्लीमेंट करि थाउ 14 point देखिबा economic is the operations माने the business the objectives are determined first objectives टा कोन करथा determined करिथा firstly and then best possible course of action is selected best possible course of actions is selected for achieving these objectives अचीविंग करे कोन से जो जहाँ भी ऑब्जेक्टिव्स हमें करिछु सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर वे रे अचीविंग को प्रकार करबो से जिंस रे हमें भाबी थाउ द ऑपरेशन सिलेक्टेड बीइंग्स बेटर अमंग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स सेथरे बेटर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स थाए देयर इज एन इकोनॉमी इन ऑपरेशंस सेथि इकोनॉमिक्स गडाक कोथरे ऑपरेशंस रे आइदर हमर जो भी बिजनेस वर्क रे काम रे आसी थाए 15 पॉइंट कोन अछि फ्लेक्सिबिलिटीज डिलीगेशंस माने कोन अंडर प्लानिंग प्रोसेस डिलीगेशंस ऑफ powers is facilitated the goals of a different person आर फिक्स डेट देखो जहाँ भी गोल अच्छी डिफरेंट पर्सन रो सेटा फिक्स डेट थाए प्लानिंग प्रोसेस कौन प्लानिंग प्रोसेस अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस रही थाए सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स आउ डेवलपिंग प्रीमिसिव आउ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शंस और इवैल्यूएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स और selecting an alternatives और सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव्स ये सब पॉइंट्स गुड़ाक आसी थाए प्लानिंग प्रोसेस रे माने अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस रहा दरकार सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर वे सेटिंग वे रे काम करिया दरकार डेवलपिंग प्रीमिसिव माने हमर को प्रकार बिजनेस रे डेवलपिंग हबो ता ऊपर काम करिया को दरकार आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शंस इवैल्यूएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अलग अलग अल्टरनेटिव्स भी देखिया को पड़ी थाए सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव सेथुरु को अल्टरनेटिव्स बेसी काम रे आसीबो सेथरे हमको ध्यान लगे को पड़ी थाए आ कोन अछि इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान हमरा प्लान टा को प्रकार हम इम्प्लीमेंट कर परिबा फॉलो ऑफ एक्शंस तो बिले माने ए सब पॉइंट्स गडा को प्लानिंग प्रोसेस रे अछि ओके तापरे देखिबा टाइप्स ऑफ प्लान्स कौन अच्छी टाइप्स ऑफ प्लान्स रे फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली हमारा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे रे चलेबा को हेले ये सब टाइप्स ऑफ प्लान्स गडा को काम रे आसी थाए ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजी पॉलिसी प्रोसीडर्स आउ मेथड्स रूल्स बजेट्स ये सब 7 पॉइंट अच्छी टाइप्स ऑफ प्लान्स रे काम रे आस्ते हमरा ऑब्जेक्टिव्स ता कोन बिजनेस रे आमे सेटा देखिता को स्ट्रेटजी लगेले आमे ऑर्गेनाइजेशन को आगु को बढ़ेबो सेटा आमे देखिता कोन पॉलिसीज लागिबो प्रोसीडर्स कोन लागिबो को मेथड द्वारा आमे काम को आगु को बढ़ाई पारिबु आउ तार रूल्स टा कोन बनेबु आउ तार बजेट टा कोन रहइबो इकोनॉमिकली ग्रोथ पई ये सब पॉइंट्स गडा को बहुत मायने रखि थाए तो देखंतु ऑब्जेक्टिव्स टा कोन टाइप्स ऑफ प्लान्स रे ऑब्जेक्टिव्स टा कोन objectives are the goal established to guide the efforts of the company guides करी थाए efforts of the company and it's a various continuous गड़ाक लागू हे थाए no planning is possible without
सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स माने को भी प्लानिंग हमारा पॉसिबल नुहे अगर आमे ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर वे रे सेटिंग न करि पारथिले। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटजी को प्रकार आम बिजनेस स्ट्रेटजी लगेबू। ए स्ट्रेटजी इज ए कम्प्रेहेंसिव प्लान। स्ट्रेटजीटा कौन गोटे कम्प्रेहेंसिव प्लान कह जाए टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जहाँ रहुची ताको प्रॉपर वे रे अचीव करिया को हेले स्ट्रेटजी करिया को पड़ी थाए। इट इज ए डिसीजंस टू अवॉइड adopt a particular course of action to reach the goals। हमर जहाँ भी गोल रहुची ताको प्रॉपर वे रे केमती का अचीव करिवो पर्टिकुलर कोर्स को हमें को प्रकार कंप्लीट करिवो सेथरे हमरा माइंड चली थाए। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड ओनली एट द टॉप लेवल। देखो टॉप लेवल रे ही स्ट्रेटजीटा काम आसी थाए ऑफ द मैनेजमेंट व्हाइल ए लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट देम। देखो टॉप लेवल रे फॉर्मुलेट हेई थाए और लोअर लेवल रे मैनेजमेंट रे कोन हेई थाए रिक्वायर करता है एग्जीक्यूट देम ताको एग्जीक्यूट करिया माने इंप्लीमेंट करबा से जिंसटा को काम रे को प्रकार लगेबा सेटा लोअर लेवल रो काम हेई थाए। तापरे हमरो थर्ड पॉइंट है पॉलिसीज। कौन पॉलिसीज काम रे आसी थाए प्लानिंग रे। Policies are generally statements which are formulated by an organization for the guidance of its employees। गाइडेंस गुड़ाक कौन रहिबो ता उपरे काम करि थाए। The objectives are first formulated। objectives गुड़ाक first formulated हेई थाए and then policies are planned to achieve them। माने प्रॉपर वे रे प्लान करा ही था ऑब्जेक्टिव्स को फर्स्ट फॉर्मुलेट करिया को। तापरे हमर अछि प्रोसीडर्स। कौन प्रोसीडर्स लगी था। प्रोसीडर्स आर डिटेल्स ऑफ एक्शंस ऑफ और द guidelines for the achievement of a business objectives। Procedures give a details and a sequence of actions to be taken for doing a particular work। हमर जहाँ भी particular work रहुची तार गाइडलाइन दिया होची कि आउ से जिनसटा को प्रॉपर वे रे अचीवमेंट केमती का करबा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट को प्रकार करबा तो सेटा प्रोसीडर्स रे काम आसी थाए। हमर प्रोसीडर्स रे को जिनसटा बेसिक जिनसटा लागिले हम गोल टा को अचीवमेंट करि परिबो। आ प्रोसीडर्स गिव्स द डिटेल्स। हमको प्रोसीडर्स द्वारा प्रॉपर वे रे डिटेल्स जाना पड़ी थाए आ तार सीक्वेंस से कोन एक्शंस को प्रकार हम नबो आगु को ता ऊपर हमको पर्टिकुलर वर्क करिया को पड़ी थाए आ प्रॉपर वे रे काम करले से जिनस रे हम सक्सेस हे परथौ। फिफ्थ पॉइंट है मेथड्स। मेथड्स माने कौन। मेथड्स refers to the managers of performing a particular task। मेथड्स द्वारा हमको गोटे पर्टिकुलर टैक्स दिया है थाए सिथरे हमें काम करिया को पड़ी थाए। ए स्टैंडर्ड वे इज डिसाइडेड फॉर अंडरटेकिंग ए टैक्स हैला जहाँ जहाँ भी स्टैंडर्ड वे हेता ताको डिसाइडिंग करता है ताको भाभी चिंती के काम करे लगेई थाए। whenever a particular method will be used to do it the employees are clear about following a particular method को फॉलो करिया को दरकार कहीं ना हमर जहाँ भी आम ऑब्जेक्टिव्स जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रे काम करथा तार प्रॉपर वे रे गोटे मेथड बना जाए तो से मेथड को ही नहीं कि आमे काम करि थाउ। तापर को अछि सिक्स्थ रे हला रूल्स। कौन रूल रेगुलेशन हेई थाए। ए रूल इज ए प्लान दैट लेज डाउन ए रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शंस विथ रिगार्ड टू ए सिचुएशंस द्वारा को प्रकार से कामटा हेई परिबो को सिचुएशन रे कोन एक्शन नेले से कामटा हेई परिबो तार गोटे रूल रेगुलेशन हेई थाए। ए रूल इज इन द नेचर ऑफ ए डिसीजंस हैला जहाँ भी डिसीजंस बनै थाउ तार गोटे रूल प्रॉपर वे रे बनै थाउ मेड बाय मैनेजमेंट
regarding what is to be done कौन करिया को पड़िबो what is not to be done देखंतु एथेरे हमको रूल बने है ऑर्गेनाइजेशन रे कि हमको को काम करिया को पड़िबो आ को काम न करिया को पड़िबो तो सेही रूल रेगुलेशन को हमको मानी कि चलिया को पड़ी थाए तापरे अछि to be done in the particular situation उपकारे काम करिवो ओके तापरे 7 पॉइंट हैला बजेट्स A budget is the monetary or quantitative expressions ଦେଖନ୍ତୁ budget ଟା କଣ ଗୋଟେ monetary ଆଉ quantitative expression ହେଇଛି of a business plan को policies to be pursued in future business budgets are mostly financial budgets कଣ financial को केमितिका कंट्रोल करि परिबो फाइनेंशियल को प्रकार काम को लगे परिबो हम बजट में मेथड टा यूज करथो एति के बजट रे हमर ए कामटा हबो से बजट को नै कि ही हमें हमर फिगर आउट करिथौ हम बिजनेस रो केते इन्वेस्टमेंट हमें लगेबो most are finance in nature but there can be other budgets also ସବୁ ଜିନିଷର ଅଲଗା ଅଲଗା ବଜେଟ୍ସ ହେଇଥାଏ ଏ ବଜେଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପାଷ୍ଟ ଫିଗର୍ସ and a future possibility ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଟା କଣ ପାଷ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଆଉ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखिକି ହିଁ ବନାଯାଏ प्रोग्रामिंग कौन प्रोग्रामिंग ହେଇଥାଏ ना प्रोग्रामिंग a programming is a single use plan laid down for a new and non repetitive activities new और non repetitive activities कहा जाए a programming is a sequence प्रोग्रामिंग टा कौन गोटे सीक्वेंस होता है ऑफ द एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू इम्प्लीमेंट एंड पॉलिसीज एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करिया को सेपरेट प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर accomplishing different tasks को नेकी हमें काम करथाओ the same programming may not be used for achieving other goals देखंतु सबू ऑर्गेनाइजेशन अलगा अलगा प्रोग्रामिंग थाए से प्रोग्रामिंग को नेकी ही हमें काम करथाओ आउ कहार भी प्रोग्रामिंग को हमें कॉपी करि परिबुनी काहे कि ना सबू बिजनेस रे तार एनवायरनमेंट ता चेंजेबल हेता ओके आई होप को तुमको ये सब पॉइंट्स गड़ा को बुझा पड़थिबो लास्ट चंगे जी भी पिला देखिचंदी थैंक यू टू ऑल आउ मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिवे आ मते सपोर्ट करिवे कि मु तम पई एते भलो भलो वीडियोस बने के आन परिबी ओके टीच मी टे भी फॉलो करि परिबे आपण आ मोर व्हाट्सएप नंबर में मु तुमको लिंक रे पठे देबी सेथरे भी तमे मो पाखरे जॉइन करि परिबो थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव ए गुड डे